Today discuss about the pituitary gland. Pituitary gland is a smallest gland and 1 centimeter in diameter and 0.5 to 0.1 gram of weight, and it is lies in the sella turcica and connected by a hypothalamus through a pituitary gland is connected by a hypothalamus. Pituitary gland is a bilobed and it is a endocrine gland, and pituitary gland is divided into a two lobe. First one is a larger and second one is a smaller. First is a anterior pituitary gland and second is a posterior pituitary gland. Anterior pituitary gland are also known as adenohypophysis, and posterior pituitary gland are also known as neurohypophysis. Pituitary gland is a anterior part is a 75% anterior part and 25 to 30% is a posterior part. Pituitary gland is a anterior portion is a median evidences, and second one that is a pars distalis, pars intermedia and cleft is a anterior part of pituitary gland, या फिर हो जाएगा एडिनोहाइपोफाइसिस इन पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड सेकेंड न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट इन फंडिबुलम स्टॉक एंड पार्स नर्वोसा. The anterior pituitary gland is a pars intermedia secreted 6 hormones. The anterior pituitary gland is a pars intermedia is secreted in 6 hormones. First one is STH, somatic thyroid hormones, या फिर हम इसको कह सकते हैं STH, एंड सेकेंड वन इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. इसी STH को ही हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, या फिर इसको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं. एंड सेकेंड होता है ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, एंड इज अ लैक्टोजेनिक हार्मोन्स यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन्स जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रीशन लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, and is a gonadotrophic hormones. Gonadotrophic hormones is contain a FSH and LH. FSH is a follicular stimulating hormones, LH is a luteinizing hormones. FSH presents in a female body and LH presents in a male body. And hypothalamus is region is the anterior part of pituitary gland, and pars intermedia यानी it is a pars intermedia presence in the lower animal but absent in the human beings. Pars intermedia is a presence in a lower animal and absence in a human beings. And pars tubularis consist of a number of blood vessels. Pars tubularis consist of a number of blood vessels, and pars distalis is a secretory gland, and secretory gland is a pars distalis which secrete a hormones. It is hormones, 6 hormones is a present, जो कि हमने पहले ही डिस्कशन कर दिया है वो 6 हार्मोन्स कौन कौन से हैं. आगे आते हैं हम न्यूरोहाइपोफाइसिस. न्यूरोहाइपोफाइसिस में 2 हार्मोन्स सिक्रेटेड होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वन दैट इज वैसोपेरिसिन. एंड oxytocin and vasopressin. Vasopressin is a commonly known as ADH, adrenotrophic hormones. And posterior pituitary gland is a posterior pituitary gland is only secreted in a 2 hormones, vasopressin and oxytocin. Oxytocin, function of oxytocin is a urinary concentration is increases during the pregnancy time. Urinary concentration is increases. Oxytocin is a form in the mammals and all mammals, especially in human beings. Oxytocin presence in the mammary gland. Oxytocin is a hormone and secreted by a mammary gland, and oxytocin form a milk, and oxytocin secreted a milk during the pregnancy. And
पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ फुल फिगर इज़ ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो है पूरा फिगर है, इसको आप जो है चाहे तो ड्रा कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड इट इज़ अ स्मॉलर ग्लैंड। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।